Ladies and gentlemen, boys and girls, how am I looking? Ladies and gentlemen, boys and girls, मैं हूँ आरीज and today I'm going to talk about some color. Yes, using color gel papers. How to shoot using color gels or these color gel papers to make your picture stand out, pop out, or how to make them look more fashionable like those high-end fashion shoots. कैसे बनाएं अपने pictures को और ज़्यादा creative और eye-catching. Simple tricks but can be very very effective. So let's get on with this video. Sit back and enjoy. तो सबसे पहले ये कलर जेल, एक मिनट, आवाज काफी करेगा बट आई ट्राई टू होल्ड इट लिटिल सॉफ्टली. तो ये कलर जेल पेपर बहुत ही चीप, वेरी वेरी सस्ता, आपको कहीं से भी स्टेशनरी शॉप से, वन सेकेंड, आपको स्टेशनरी शॉप से या फिर कोई भी फोटोग्राफी शॉप से आराम से मिल जाएगा. और यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन ऑल्सो. हर तरह के, काफ़ी तरह के जेल पेपर्स आते हैं, अलग अलग कलर्स के आते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, पिंक, वट एवर. देयर आर लॉट ऑफ कलर्स एंड देयर आर वेरी वेरी चीप, सो यू कैन बाय इन बल्क एंड जस्ट कीप. डिड दैट जस्ट राइम? मे बी. कैरिंग ऑन. तो ये कलर जेल पेपर्स मेरे बैग में हमेशा रहते हैं. व्हेन आई गो ऑन माय फोटो शूट्स आई जस्ट हैव टू कैरी देम बिकॉज फर्स्टली इट्स वेरी इजी टू कैरी देम एंड सेकेंडली दे विल ऑलवेज एड समथिंग एक्स्ट्रा टू माय पिक्चर्स और माय वीडियोज to make them stand out, or when there's like a boring backdrop and there's nothing much interesting happening, it's always nice to just put on one gel paper and then do some crazy artwork and create some magic. So I recommend that whenever you go on a shoot, please do carry gel papers, and not just one or two, just carry a bunch of them, different colors, different shapes, just carry. And for attaching them to your lights or your LEDs or your flashlights or your speed lights, you don't have to have clamps or holders or anything like that. इसके लिए आपको simply चाहिए ये क्लिप्स या ऐसा क्लिप या जैसा भी छोटा मोटा हेयर क्लिप हो या जो भी हो, या फिर स्टेशनरी क्लिप हो, जैसा भी क्लिप हो, यू जस्ट नीड अ फ्यू क्लिप्स एंड सम क्लैम्प टू जस्ट रैप द जेल पेपर अराउंड योर लाइट. मतलब कि लाइट के आगे लगाना हो या अराउंड लगाना हो. और कोई कोई एलईडीज में ऐसे प्रॉपर क्लैम्प्स नहीं भी होते या जगह नहीं होती है जहां पर आप ये जेल पेपर लगा सकते हैं. सो ऑल यू नीड टू डू इज just take the whole gel paper and clamp it around the light. I know बहुत जो बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेशनल लोग होते हैं वो शायद बोलेंगे अरे ऐसे कैसे लगा रहे हो, but it does the job. You have to make things work and get your results. That's the main aim, right? So now you know how to attach a gel paper on your light. अब लाइट पर ये जेल पेपर लगा दिया तो यूज कैसे करें, and what is the perfect way to use a gel paper, and what is the perfect way to use a light which looks ethical and which looks perfect like a fashion high-end photo shoot. अब वो तो एक्सपेरिमेंट करने की बात है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये शॉर्ट्स हैं. You can see that I have clicked all these pictures over here that you see with various combination of gel papers and putting them on top of my lights in different angles, different colors. So one needs to keep experimenting कि कभी यहाँ पर लगाना है, कभी आगे लगाना है, कभी साइड में दोनों लाइट्स पे सेम कलर लगाना है, या एक लाइट पर रेड लगाना है, एक लाइट पर ब्लू लगाना है, which is a very very classic standard way of using lights, one red and one blue. So according to me, red and blue gel papers are a must to have. वो तो I mean you should have because it's a classic great combination to use in your pictures. Now if you've never used a color gel before, I suggest that you start by using it with a LED light, because with a flashlight sometimes you don't know the intensity or how the light will fall. तो I suggest कि पहले LED light, continuous light पर जेल पेपर लगाकर टेस्ट करो एंगल ऑफ लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कैसे वो रेड कलर लग रहा है चेहरे पर, बिकॉज अलग अलग कलर टोन्स पर अलग अलग कलर अलग तरह से दिखते हैं. सो यू हैव टू बी श्योर दैट द रिजल्ट दैट इज कमिंग आउट इज ऑलरेडी टेस्टेड बिफोर यू जस्ट कीप क्लिकिंग एंड देन इन द एंड यू सी दैट अरे अच्छा नहीं लग रहा. So you need to test it out, and for that I suggest red is like the universal accepted color which looks good on most of the faces, and usually red color does look nice on faces. Also कई बार कुछ imperfections होते हैं faces पे या थोड़े बहुत dark circles या under eyes होते हैं, तो एक red gel paper अगर सामने लगा दिया और वो आर्टिस्टिकली यूज करने के चक्कर में फोटोज अच्छी भी आ जाती हैं और चेहरा भी ज़्यादा अच्छा दिखता है. ट्राई करके देखना. So for a start, try using only a red gel and using that only red gel directly on the face. So the whole face will look red and a little crazy, but it will look nice if you use it in a nice manner, in a proper angular way and not just straight in front. So it could look very nice. Now to combine with that, you can use a blue gel at the back and a red gel in front,
or you can switch them कि blue gel से face light हो रहा है and red light पीछे बाल पर आ रही है. Now if sometimes the blue light in my experience doesn't look very nice on the face. कभी कभी blue light face पे थोड़ा सा harsh लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है, alienish लगता है. तो उसके लिए I suggest just use a white light, a normal flashlight जैसे like we use like this light over here. Just use a normal white light on the face and use red light as a hair light, especially for models, for girls, even for guys. Red light as a hair light or from the back and white light in front. That combination is classic. And I have some examples over here which I have clicked and they really look nice. They look very high-end, very professional and yet very simple to achieve. तो ये ट्राई करके देखो. Another great way to use color gel or color lights is by lighting up the backdrop. Supposing आप यहाँ पर अपना portrait खींच रहे हैं, so you can always use a flash with a different color gel paper, supposing a yellow gel paper, and just flash it at the back on the backdrop or on the wall. So when you shoot a model, the model will be in a normal white light, but at the back, the backdrop will be lit up with another kind of light, maybe a red or a yellow or whatever. So that little contrast makes the smallest, the dullest places look very different and very appealing, because sometimes हमारे पास अच्छी locations नहीं होती शूट करने के लिए, तो उनको अच्छा बनाने के लिए लाइटिंग का इस्तेमाल करो. इंटरेस्टिंग लाइटिंग से कोई भी डलेस्ट जगह या कोई भी बोरिंग जगह भी बहुत अच्छी दिखने जाती है. So use it on a backdrop and then you can shoot a model with another basic plain white light. And now, of course, with these color gels and color lighting, there's no specific rule or there's no specific way to light a person up. Also in photography in general, you need to keep experimenting. So you can put 2 red lights on the side, maybe you can put 1 blue, 1 red. You can put 1 red in front, 1 blue at the back, or vice versa, or put a red light below it. नहीं, वो थोड़ा सा डरावना लग सकता है, लेकिन experiment. There's no harm in experimenting, switching gels, using one gel for all, using different gels. So a combination of different kind of gels, different kind of lights, different way of lighting an environment. Especially, okay, one more pro tip, as in a lot of times I have shot in hotel rooms or interesting places which have great bathrooms, and bathrooms जैसे कि small places होते हैं and usually they have reflective surfaces like tiles and all. So especially in resorts or hotels where I shoot, in those places when they have these small bathrooms which are very nice and shiny, उसके अंदर if you use the red gel on the model or in the bathroom, the light reflects very interestingly. तो पूरा room पूरा एक red room हो जाएगा या interestingly blue हो जाएगा. तो these are great places to experiment with gel papers and lights. Try करो, देखो बड़ा मजा आएगा. I think that's roughly it. How to use color gels on portraits, on your models for great creative fashion photography. And it is a very cheap but yet a very effective way to take your photography and videography to the next level. तो ट्राई करो और मुझे बताना कैसा लगा. कुछ दिक्कत आए तो please leave a comment. I shall get back to you. If you want to see my work as a fashion photographer, please do follow me on my Instagram handle, which is this, that is Aries, AREESZ. And well, I'll always respond to your DMs if you inbox me or if you comment over here too. So, I hope you've subscribed to this channel, because I've been talking, and if you don't subscribe, then what's the point even? Nahin? Okay. If you haven't, then well, what can I say? Thanks for watching. Leave a like at least. Until next time, keep clicking.